हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये साइंस का चैप्टर है, बायो में आती है। आज हम इसके सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, व्हाट इज स्टिमुली? द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली. In high animals, there are two systems of control and coordination. पहला है nervous system, दूसरा है endocrine system. Nervous system in animals. Nerve cells and a neuron is a structure and function unit of nerve system. A neuron consists of three prominent parts. पहला part क्या है? Cell body. The cell body of a neuron is called cytosol. It receives nerve impulse from the dendrites and transmits it to the axion. Second, that is dendrites. They are short, tapering, much brain structure arising out from the cell body. It transmits the nerve's impulse towards the cell body. Third, that is axion. It is a very long cylindrical structure. It consists of nerve impulse from the cell body. मैंने उसका एक डायग्राम आपके लिए बना दिया है. अब arrangement of neurons. The neurons lie end to end in change through the track transmit nerves impulse in the animal body. There is a very minute gap between the two neurons. This minute gap is called synapse. अब कैसे ये वर्क होती है, मैंने इसको एक रे डायग्राम में आपको बनाने के दिखाया है. फर्स्ट स्टिमुली, फिर डेंड्राइट, फिर जाती है सेल बॉडी, फिर एक्सियम टर्मिनल, फिर वहाँ से पैसेज ऑफ इम्पल्स थ्रू द साइनेप्स. ठीक है, चलिए आगे चले. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. तीन तरह के इसके न्यूरॉन्स होते हैं. फर्स्ट है sensory neurons. These often occur in the sense organs. They receive stimuli by the dendrites. They are sensory neurons transmit the nerve's impulse towards the central nervous system. दूसरा है motor neuron. They transmit nerve's impulse from the CNS towards the affective organ. Third, releasing neurons. They serve links between the sensory and the motor nerves. Fourth, receptors. A receptor is a nerve cell or a group of nerve cell which is sensitive to specific stimuli. अब मैंने तीनों का अलग अलग बना के दिखाया और किस किस में है वो. जैसे एक स्टिमुली है, एक रिसेप्टर है और लोकेशन ऑफ रिसेप्टर. जैसे हीट है, थर्मोलिपिज्म स्किन से है, उसी तरह कोल्ड भी स्किन से है. फोटो रिसेप्टर एंड फोटो रिसेप्टर सबका मैंने दिया. स्मेल, टेस्ट एंड टंग सबका मैंने बता दिया आप. चलिए, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? अ रिफ्लेक्स एक्शन मे बी डिफाइंड एज अ spontaneous automatic and mechanic response to the stimuli acting on a specific receptor without the will of an animal. मैंने आपके कंट्रोल में नहीं है ये. अब उसका मैंने एक रे डायग्राम बना के आपको दिखाया है. स्टिमुली रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व्स में, और मोटर नर्व्स अफेक्टिव मसल और ग्लैंड को भेज देता है. अब रिफ्लेक्स आर्क. द पाथ टेकन बाय द नर्व्स इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. It consists of 5 parts. First part है receptor, second sensory nerves, portion of CNN, motor nerves and effectors. चलिए इसका आगे हम लोग देखते हैं. अब मैंने ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक रे डायग्राम आपके लिए बना दिया. ह्यूमन नर्वस सिस्टम तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल में कौन कौन से आते हैं? वॉलेंट्री सिस्टम. अब फिर वॉलेंट्री सिस्टम में हम देख सकते हैं ब्रेन के साथ कौन कौन से आते हैं? ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन.
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। उसके नीचे क्या आते हैं, जब मिड ब्रेन में आते हैं तो उसके अंदर आते हैं ऑल फैक्ट्री रिलीज करते हैं, इट रिलीज द सेंस ऑफ स्मेल ऑल फैक्ट्री से। फिर बीच वाला दैट इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दैट इज फोबेक्रोम्स, इट इज द रीजन ऑफ द स्पीच, मसल्स अट्रैक्ट एंड हायर मेंटल एक्टिविटीज, और इसके सारे एक्टिविटीज क्या क्या होता है उसमें हमने बताया। थर्ड जो हमने दिखाया है नेक्स्ट वाले में, दैट इज हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन में तीन आते हैं, दैट इज सेरेब्रम, पेंसाविल्डिल एंड मेडुला ऑडियम। अब सेरेब्रम में कौन कौन से, मेंटेन्स द पोस्चर ऑफ द बॉडी, पेंसाविल्डिल में कंट्रोल्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, एंड थर्ड वाला में कंट्रोल्स द हार्ट बीट, ब्रीदिंग, कफ एक्सेट्रा। अब आते हैं व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड। A spinal cord is a cylindrical structure and is 45 centimeter long. Spinal cord is enclosed in a vertical column of a backbone which protects it. 31 pairs of spinal nerves arises from the spinal cord. Spinal cord performs two important functions. First, it conducts sensors and motor impulse. It acts as a control for the reflex action. Thus, it reduces the brain work. Second, endocrine system. A cell and a tissue or an organ which senses certain useful chemical compounds like glands. Animals have three types of glands. First, endocrine gland. These glands have a duct for discharging their secretion into the body surface or in the cavity of the body. Example, sweat gland, salivary gland and liver. अब आते हैं what is an endocrine gland. These glands are ductless glands and pose its secretion into the blood. Example, pituitary gland, thyroid gland, etc. अब आते हैं thyrocrine gland, heterocline gland. These glands consist of an exocrine and endocrine gland. Example, pancreas and. अब मैंने इस पूरे की एक समरी बना के कोशिश किया है, इसमें मैंने पूरा डाला है किसका और इसका फंक्शन क्या है, नो ग्लैंड्स, पोजीशन, हार्मोन्स और उसका फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल हेप्टोथायरोइडिज्म, अब वो कहाँ पर होती है, बेस ऑन रीन एफोसिस। होमोग्लोबिन्स, हार्मोन्स यहाँ रिलैक्स होती है, उसके सारे फंक्शंस मैंने आपके लिए लिख दिया है। सारे ग्लैंड्स के सारे फंक्शंस मैंने 1 by 1 करके लिख दिया है, कैसे कहाँ होती है, जस्ट रीड ऑल दिस थिंग्स। देखिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ भी मैंने वही चीज़ को कंटिन्यू कर दिया है, थायराइड किसके साथ है, एक समरी बना दिया ताकि आप यहीं से आप पूरा का पूरा सिस्टम को, जो आपने मैंने वहाँ वर्ड्स लिखा है, यहाँ पूरा का पूरा आप सिस्टम को पढ़ के एक ही बार में आप कर सकते हो। दिस इज अ कंप्लीट समरी ऑफ द मेजर हार्मोन्स इन आवर सिस्टम। ठीक है, वही सारा है, आप देख सकते हैं, एंडोक्राइन, सेक्सन, इंसुलिन, सब का मैंने लिख दिया है। अब आते हैं मेन, रिकॉग्निशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। Recognition and transportation of hormones. Hormones are the chemical messengers secreted by the ductless endocrine glands that regulates the biological process in the living organism. The cell of the endocrine releases hormones into the bloodstream. The blood carries from the site of the duct into the site of action. These hormones act as a specific organ called the target organs. The target cells has its own on its surface or in its cytoplasm a specific protein molecules calculating the receptor. The receptor can recognize and pack out the specific organs. A hormones now bind to the receptor and receives its message to the target cell. अब आते हैं फीडबैक
that is feedback mechanism. What is feedback mechanism? Hormones helps to maintain the integrated action and the feedback control. The feedback control is most negatively and regulated positively and rarely positive. In a negative feedback controls system of hormones, it after when it levels the blood rise when the blood level rises above the normal. In a positive feedback controls biochemical substance increases the own product, example लेबर पेन इन वुमेन. तो पहले वाले में क्या होता है, नेगेटिव वाले में हमारा हार्मोन्स सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है. और सेकंड वाले में ये लेबर पेन जो वुमेन्स में होता है उसके बारे में. What is control and coordination in plant? Plants do not have a nervous system, muscles or sense nerves. Plants show different types of movements in response to the various stimuli. Plant movement are broadly classified into two types. दो तरह कौन कौन सा है? First is nastic movement. These are non-directional movements occurs in response to touch. These reveal intermediate response to the stimuli but do not involve in growth. Example, touch me not plants. Second one is tropical movements. It is a directional movement of the specific part of a plant in response to the stimuli called a tropical movement. If the movement is of the plant part towards the stimuli is called positive tropism. If the movement of the plant that is part away from the stimuli, it is called negative tropism. Types of tropism. Phototropism. It is the directional movement of plant parts towards the light stimuli. Stems show positive phototropism. Second is hydrotropism. The movement of a plant parts towards water is called hydrotropism. Roots show positive hydrotropism and shoot show negative hydrotropism. Geotropism. It is the directional movement of plant parts towards the gravity. Roots show the positive and the stems show the negative response. अब आते हैं chemotropism. It is the directional movement of a plant part towards the chemicals. During the process of fertilization, growth of protein tubes towards the ovule. Types of plants hormones. पहला, plant hormones or the phototropism are organs, chemical substances present in the plants which is being about control and coordination of various activities in them. Second point, therefore plants hormones are also known as plant growth regulators. There are 5 major types of plant hormones. First, SW swings. These promote cells enlargement and cells differentiation in plants. They also promote stems and fruit growth. They regulates important plant growth and the movement that in tropism. These includes parthenocarp. Next, गिबरलिज्म. इसमें आती है cytokinase. These promotes cell division in plants. They help in breaking the demarcation of the seeds and buds. They promote the opening of the stomata. फिर आते हैं इथाइन और इथेनॉल्स. It promotes the growth of the fruits. It helps in breaking the colonial of the buds and seed. It promotes the following of seeds. अब what is ABA? That is eibonic acid or ABA. It promotes the closure of the stomata. It also promotes the falling of the leaves. It promotes the plasmating in seeds and buds. Ethioins promotes the ripening of the fruits. यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए.
Thank you for watching my video. Have a nice day.